Assalamu alaikum, dear students. Today we will start week number 6 of Introduction to Marketing, and in this week we will discuss consumer buying behavior. And in this week we will cover the following topics: consumer buying behavior. We will try to understand what is consumer buying behavior. After consumer buying behavior, we will try to understand the model of consumer buying behavior, and and so there are some factors which affect the behavior of the behavior of a consumer to purchase certain things, which is social classes, motivation, perception, and some other aspects. We will try to go through all the aspects. So first of all, we will start with the definition or with the basic understanding what is consumer buying behavior. Basically, consumer buying behavior is the buying behavior of the final consumer. Final consumer means end user. End user means the people who use household products. Household products means the products which we use at home. Normally, we use these products at home. There is another category or another batch of people who purchase the product and they do not use at home, they use in business, which is included in business buying behavior, which we will discuss in future. So first of all, we will understand, or we will try to understand, the consumer buying behavior. So who is the consumer? Consumer is the basically end user who is using product at home. Students, so who is consumer? What is consumer buying behavior? Consumer buying behavior is the behavior of final user, individuals and households who buy the goods and services for personal consumptions. They do not purchase. They do not purchase the product for reselling. They do not purchase the product for the purpose of any business or any processing and making another product to sell in the market. They purchase product to use in their daily use to fulfill their daily needs. So when we understand the consumer buying behavior, then we will try to know what is consumer market. Consumer market is all the personal consumption of final consumer. What is consumer market? Everywhere in a market where your customers or consumers exist. This is called your consumer market. Consumer market means consumers who are actual consumer and potential consumer, which we have already discussed in detail in previous classes. And it is the combination of all the actual potential buyers, or after buyers we can say the consumers. So what is the let's discuss the model of consumer buying behavior. In model consumer buying behavior, there are some factors which come across. Number one, the environment. Number two, buyer's black box. Number three, the response of buyer. Let's have an idea on the slides that so there are three factors. Number one, environment. Number two, buyer's black box, and number three, buyer response. First of all, we will understand the market. Environment. When we talk about environment, there are multiple factors which come our way. Number one, there are some marketing stimuli, which there are some marketing stimuli which affect our decision making. Okay, in marketing stimuli, the main features are product, place, price, and promotion, and these are the factors which we have already discussed in our integrated marketing and in our 4Ps and marketing mix. So we have discussed these details, how they affect our marketing decisions. We have already
detail. Number two, there are some other aspects. What are the other aspects or other factors? Which these are environmental factors. Environmental factors that which are outside the organization. Inshallah, after consumer buying behavior and after business buying behavior, we will try to know what is the marketing environment. So these are the environmental factors. Number one is economic factors. Number two, technological factors. Number three, social and cultural factors, which basically affect the company to make a product. So these are the factors which affect the company. So first of all, which are the stimuli? These are the stimuli. Stimuli का मतलब होता है बेटा मुहर्रिक, जो हम लोगों को तहरीक हमारे अंदर पैदा करता है. ठीक है, कौन सी चीज है जो हमारे अंदर तहरीक पैदा करेगी कि खास किस्म का काम करने के लिए? तो मार्केटिंग स्टिमुलाई और अदर स्टिमुलाई. अगर इकोनॉमिक सिचुएशन चेंज हो जाती है, ठीक है, अगर इकोनॉमी बहुत खराब हो जाती है मुल्क की, तो फिर हमें ये स्टिमुलाई बन जाएगा. ठीक है, ये एक स्टिमुलाई बन जाएगा कि हम भी अपनी प्राइस में इजाफा करें. हम अपनी प्राइस में इजाफा क्यों कर रहे हैं? हमारी प्राइस में इजाफे का मुहर्रिक क्या बना? किसी मुल्क की इकोनॉमी के अंदर खराबी, डॉलर के रेट में, एक्सचेंज रेट के अंदर इजाफा. इसी तरीके से अगर टेक्नोलॉजी बदल जाएगी तो फिर हम भी अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज कर देंगे. हम अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज क्यों करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी मुल्क के अंदर या सोसाइटी के अंदर टेक्नोलॉजिकल चेंज आ चुका है. हम लोग 2G पे बैठे हुए हैं, लेकिन दुनिया अगर 5G में चली गई है और 5G लॉन्च हो गई है हमारी मार्केट में, तो हमारी कंपनी जो है उसको भी 5G में शिफ्ट होना पड़ेगा. ठीक है, तो इसका मतलब है ये वो स्टिमुलाई है. सोशल, अगर सोसाइटी के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स आ जाती है तो हमें सोशल नॉर्म्स को देखना पड़ेगा. कल्चर, जिस मुल्क में हम जाएंगे, जिस इलाके में भी हम जाएंगे, उस मुल्क और उस इलाके और उस रीजन के कल्चर के मुताबिक हम अपनी प्रोडक्ट्स बनाएंगे. सो दीज आर द फैक्टर्स बेटा जो अफेक्ट करेगी, स्टिमुलाई बनेगी. स्टिमुलाई से हमारा जो मुहर्रिक बनेगी कंपनी के डिसीजंस को चेंज करने में. ठीक है, हम जब ये तमाम के तमाम एस्पेक्ट्स को अपने मद्देनजर रख के कोई प्रोडक्ट बना देते हैं, तो फिर प्रोडक्ट बना देते हैं तो फिर हम लोग चले जाते हैं बायर्स ब्लैक बॉक्स. बायर्स ब्लैक बॉक्स के बारे में हमें नहीं मालूम कि बायर रिस्पॉन्स, बायर जो है उसका रिस्पॉन्स कैसा होगा. यहाँ पे हम देखेंगे बायर जो है वो, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि बायर जो है वो किन किन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ हमारी प्रोडक्ट जो है उसकी तरफ आता है. और दूसरे नंबर पे हम देखेंगे बायर्स का रिस्पॉन्स, कि बायर जो है वो मुख्तलिफ मामलात में रिस्पॉन्ड क्या करते हैं. ठीक है, उसके बाद जब हम लोग बायर ब्लैक बॉक्स में भी चले जाते हैं, तो बायर ब्लैक बॉक्स के बाद हम देखेंगे बायर रिस्पॉन्ड क्या कर रहा है. हम लोगों ने मार्केट में प्रोडक्ट दे दी, प्रोडक्ट के बाद हम लोगों ने मार्केट में ब्लैक बायर्स जो है उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक दे दी, बायर का ब्लैक बॉक्स में चले गए. उसके बाद हमारा बायर जो है वो रिस्पॉन्ड क्या करेगा? क्या वो हमारी प्रोडक्ट खरीदेगा या हमारी प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा? So we will see the response of our buyer. So first of all, buying attitude and buying behavior. What are the basic buying attitude and buying behaviors of preferences of our customers? Number two, purchase behavior. What is the purchase behavior? What buyers buy? When do they buy? Where and how much do they buy? Brand and company relationship behavior. So these are all the factors which come under way when we try to understand the buying behavior of consumer. So here are some factors which are affecting consumer buying behavior. Factor influencing consumer buying behavior. These are the factors, students, which influence the buyer to change his or her buying decision. हमारा कल्चर, हमारा सोशल नॉर्म्स, हमारी पर्सनैलिटी, उसके बाद हमारी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ये वो फैक्टर्स होते हैं जो हमारी बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक है, वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं उसकी हम लोग आगे जाके डिटेल में एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे और हम लोग इसको अंडरस्टैंड भी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट, कल्चरल फैक्टर्स. व्हाट इज कल्चर? It is learned values, perceptions, wants and behaviors from family to other important institutions. हमारे कल्चर में कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं, कुछ ऐसी परसेप्शंस होती हैं, कुछ ऐसी वांट्स और बिहेवियर्स होते हैं जो हम अपनी फैमिली से सीखते हैं और अपनी फैमिली के अलावा जो लार्जर इन्वायरमेंट होता है, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, स्कूल, मदरसा, मस्जिद, इलाका, कॉलेज, ठीक है, वहां तक ये सारी के सारी हमारी जो वैल्यूज हैं वो जाती हैं. ठीक है, और इसी तरीके से जो बड़ा कल्चर होता है उस कल्चर के साथ कुछ सब कल्चर्स भी होते हैं. एक बहुत बड़ा कल्चर है, उस बड़े कल्चर के अंदर एक उसी कल्चर से रिलेटेड सब कल्चर भी होगा.
ठीक है, या एक से ज्यादा सब कल्चर्स होंगे। मिसाल के तौर पे सब कल्चर्स आर ग्रुप ऑफ पीपल विद इन अ कल्चर with shared values systems based on common life expectations, sorry, experiences. So subculture is a group or a culture within a culture. So we were discussing subculture. Subculture means the group of people within a culture. In a broader culture, there is a group which has some distinct values and system among the members, which is shared among the members. For example, Pathan is a culture, but there are different types of Pathan. Afghani Pathan, Pathan from Miyawali, from Peshawar. So they may have different and distinct values shared by them. Number two, American, African American, Asian American, okay, and then there are some mature customers. In next slides, social factors, social classes. So there are some social classes, students. When we categorize our society, there are three different categories: upper class, middle class, lower class. But we will discuss in detail in next slide. Okay, there are some divisions and there are some categories in our society, and each category, the members of each category share the same values, same interests, and same types of behaviors. These are measured by combination of occupation, income, education, wealth, and other variables. So how do we categorize our consumers in different categories of social class? We use income, education, wealth, and occupation. These are the factors that we take to measure their class. So in social classes, let's have a detailed understanding. Yes. So first of all, we'll talk about the upper class. In a society, there are some upper class. Upper class, basically, they are 1% of total. They are 1% of total population, and they are the people who are elite. They have inherited wealth, and they use a lot of money, and they put a lot of money in charity. They own more than one homes, they have more than one vehicles, and their children go to very best and very expensive schools in the society. And and in Pakistan society, the students, the children of elite class, they go to abroad for higher studies. Next, this is middle class. Middle class, these are basically 12%. This percentage may vary because the income of people and income of classes vary time to time. So we cannot say that these are the fixed and clear figures. Figures may change gradually. So professional, they are professional, they are independent business persons, and and their corporate managers who possess neither family status nor unusual wealth. They do not inherit, amount from their they do not inherit amount or wealth from their forefathers, but they are a businessman. They start some business. They are some professionals. They're corporate managers and corporate individuals who earn amount, and they become middle class. After that, working class. वर्किंग क्लास, ये कौन लोग होते हैं? ये ऑलरेडी 39% तकरीबन लोग होते हैं, और ये लोग जो हैं ये जॉब्स कर रहे होते हैं, और इनकी अपनी इनकम जो है वो इनका स्कूल जॉब बैकग्राउंड अच्छा होता है, क्योंकि अच्छा बैकग्राउंड और अच्छी
तालीम हासिल करने के बाद, स्किल्स वगैरह सीखने के बाद इनको अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं, जिससे ये अपना गुजर बसर करते हैं। उसके बाद आता है लोअर क्लास। लोअर क्लास जो है ये 9% होता है वहाँ सोसाइटी का, और इसमें क्या होता है कि ये गरीब लोग होते हैं, ये इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो पॉवर्टी लाइन के बिल्कुल बराबर बराबर होता है, थोड़ा सा ही ऊपर होता है। और ये लोग जो होते हैं ये किसी न किसी तरीके से अपना गुसर बसर हासिल कर लेते हैं, और पैसे कम होने की वजह से, रिसोर्सेज कम होने की वजह से ये बहुत अच्छी एजुकेशन या ये बहुत अच्छी स्किल्स जो है वो नहीं सीख पाते। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इसमें अपर क्लास और लो क्लास भी होता है। सो दिस इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल classes in our society. So we will move to the other factor of group and social groups and social networks. So these are basically in society. Yes. Reference groups and social and family and roles and status. So we are discussing social factors which affect the consumer buying behavior. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ग्रुप्स और सोशल नेटवर्क्स हैं जिसकी वजह से हमारे ग्रुप डिसीजन चेंज होते हैं। मिसाल के तौर पे मेंबरशिप ग्रुप है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मेंबरशिप ग्रुप्स हैं। ये जो मेंबरशिप ग्रुप्स होते हैं, हम किसी न किसी ग्रुप के मेंबर जब बन जाते हैं तो फिर हमारा परचेज डिसीजन भी चेंज हो जाता है। मैं अगर आप लोगों को ये कहूँ कि मैंने एक जिम ज्वाइन करना है, ठीक है, इफ आई ज्वाइन जिम, तो फिर मेरी फूड हैबिट्स चेंज हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद मेरा जो कॉस्ट्यूम है वो मैं परचेज करूंगा, उस हवाले से मेरी चेंजेस आ जाएंगी। अगर मैं कोई ऐसा ग्रुप ज्वाइन कर लेता हूं जो हाइकिंग पे लेके जाता है, तो फिर मुझे जॉगर्स खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। तो फिर मुझे वो हाइकिंग करने की वो जो स्टिक यूज होती है वो यूज करनी पड़ेगी, फिर मुझे ट्राउजर और शर्ट्स वो यूज करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं तो उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद फिर हमारा जो परचेज डिसीजन होता है वो उस ग्रुप की वजह से, वो ग्रुप हमारा परचेज डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। सो व्हेनेवर वी ज्वाइन एनी ग्रुप, whenever we become a member of any group, the group influences our purchase decision, ठीक है। When I go to gym, then my food habits will be as per the requirements of the gym. When I go to hiking, then my purchases will be as per the requirements of the hiking. नंबर 2, एस्पिरेशनल ग्रुप। एस्पिरेशनल ग्रुप्स कौन से होते हैं? ऐसे ग्रुप्स होते हैं बेटा जिसके मेंबर्स होते तो नहीं है, बट वी वांट टू बिकम द मेंबर, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके हम लोग मेंबर बनना चाहते हैं। देयर आर सम ग्रुप्स वी आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, बट वी वांट टू बिकम देयर मेंबर इन फ्यूचर, और वी विश टू बिलोंग टू दैम, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मेरी पीएसएल जो है, पीएसएल में क्रिकेट में बहुत ज्यादा शौक से खेलता हूँ। पीएसएल में जो लाहौर कलंदर है वो मेरी फेवरेट टीम है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, टीम है। आई कैन नॉट बिकम द मेंबर ऑफ दिस टीम, बट आई एम एन एस्पिरेशनल मेंबर ऑफ दिस टीम। Whenever PSL matches are going on, a tournament is going on, I will wear PSL tracksuit. सॉरी, लाहौर कलंदर ट्रैक सूट। तो मैं ट्रैक सूट लाहौर कलंदर का पहनूंगा। वो लाहौर कलंदर का जो मैं ट्रैक सूट पहनूंगा वो मैं क्यों पहन रहा हूँ? क्योंकि लाहौर कलंदर मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। एस्पिरेशनल ग्रुप, आई वांट टू विश टू बिलोंग टू लाहौर कलंदर। तो चूंकि मैं उससे बिलोंग करना चाहता हूँ तो मैं, मेरी एस्पिरेशन है कि ये ग्रुप बहुत अच्छा है और मैं इस ग्रुप के साथ मैं का मेंबर बनना चाहता हूँ, तो ये कहलाएगा मेरा एस्पिरेशनल ग्रुप। और एस्पिरेशनल ग्रुप जो है वो भी हमारे परचेज डिसीजन जो है उनको इन्फ्लुएंस करता है। नंबर 3, रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस में क्या होता है? रेफरेंस मीन कंपैरिजन। व्हेन वी टॉक अबाउट रेफरेंस, वी टॉक अबाउट कंपैरिजन। वी टॉक अबाउट कंपैरिजन, ठीक है। और जब हम लोग रेफरेंस ग्रुप की बात करते हैं, कंपैरिजन की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हमारा जो ग्रुप है वो उन ग्रुप से बेहतर है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि वी आर बेटर, हम लोग जो हैं वो दूसरे लोगों से बेहतर है। हम कंपेयर कर रहे होते हैं अपने आप को दूसरे लोगों के साथ। जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से कंपेयर कर रहा होता है तो वो ग्रुप कहता है कि हम लोग इस स्टैंडर्ड के लोग हैं,
जब हम इस स्टैंडर्ड के लोग हैं तो हमारी परचेसेस, हमारे डिसीजंस, हमारा अटायर और हमारे जितने भी जो मेन डिसीजन